Welcome you all. So here we are going to discuss the disorders of urea cycle. In previous lecture we have seen urea cycle. Now here we are going to discuss various types of disorders. So here we have seen the carbamyl phosphate synthetase 1. This is the enzyme which is required for formation of carbamyl phosphate from ammonia and bicarbonate. So imagine what will happen. Suppose this enzyme is deficient. So यहाँ पे क्या होगा? Is increase in level of ammonia and it is responsible for ammonia toxicity. अगर ये enzyme deficient है तो यहाँ पे ammonia बढ़ेगा. So because of this ammonia elevation, it is responsible for various symptoms. So if there is deficiency of this enzyme, then it is called as a hyperammonemia type 1. If this ornithine transcarbamylase it is deficient, it is responsible for increase in level of ammonia again, and again it is responsible for increase in ornithine. यहाँ पे ammonia भी बढ़ेगा और ornithine भी बढ़ेगा. If this enzyme is deficient, that is ornithine transcarbamylase. And here you can see this disorder is called as hyperammonemia type 2. इसको हम बोलेंगे hyperammonemia type 2. Next disorder is if there is a deficiency of enzyme arginosuccinate synthetase. If this enzyme is deficient, again there is an increase in level of this citrulline. It is called as a citrullinemia, increase in concentration of citrulline. Next disorder is if there is a deficiency of enzyme argininosuccinase, and because of deficiency of this enzyme, the condition is called as argininosuccinic aciduria. If enzyme arginase is deficient, it is responsible for arginemia, it is hyperarginemia. And if there is a deficiency of enzyme N-acetylglutamate synthetase deficiency, if this enzyme is deficient, that is responsible for which is responsible for allosteric activation of enzyme carbamyl phosphate synthetase 1. अगर ये एंजाइम यहाँ पे नहीं होगा तो कार्बोमाइल फॉस्फेट नहीं बनेगा क्योंकि कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेसिस की एक्टिविटी वहां पे नहीं होगी. And next one is if there is a defect in the ornithine transporter. ये प्रोटीन जो होता है which is responsible for transporting ornithine from cytoplasm to mitochondria. अगर ये यहाँ पे नहीं होगा तो ornithine will not enter and which is responsible for disorder called as a triple H syndrome जो देखें हम बाद में, and which is responsible for causing hyperornithinemia. Okay. So what are the symptoms? यहाँ पे symptoms क्या होंगे because of this disorder? The normal range of ammonia है it is 20 to 80 micromole per liter. But symptoms appears when the ammonia is more than 150 माइक्रोमोल पर लीटर. सिम्टम्स आएंगे जब अमोनिया की लेवल 150 माइक्रोमोल पर लीटर हो जाएगी. और इसके क्लासिकल सिम्टम्स है यहाँ पे स्लरिंग ऑफ स्पीच, ब्लरिंग ऑफ विजन एंड ट्रिमर. अगर किसी ने पूछा हाइपर अमोनीमिया के और अमोनिया इंटॉक्सिकेशन के सिम्टम्स क्या है तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए स्लरिंग ऑफ स्पीच, ब्लरिंग ऑफ विजन एंड ट्रिमर. ये इसके क्लासिकल सिम्टम्स है यहाँ पे. Another symptoms of this hyperammonemia is in GI tract there is a diarrhea, nausea, vomiting and protein avoidance. ये पेशेंट प्रोटीन को अवॉइड करेगा, प्रोटीन खाने की इच्छा नहीं होगी. डायरिया होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा एंड प्रोटीन अवॉइडेंस. द नेक्स्ट वन इज द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में आएगा सीजर्स, लिथार्जी, अल्टर्ड सेंसोरियम एंड irritability. These are the neurological symptoms of urea cycle. So this hyperammonemia, respiratory acidosis and encephalopathy is continuously चालू रहेगा because of increased level of ammonia. Now, what are the mechanisms of ammonia toxicity? So as we have seen that this ammonia which is toxic, and this ammonia it easily combines with the alpha ketoglutarate. हमने देखा था कि कन्वर्शन ऑफ ग्लूटामेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट कैसे होता है बाय द एक्शन ऑफ
एंजाइम ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। बट अभी यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट है हमारे पास, वो कंबाइन होगा हमारा अमोनिया से और वो बनाएगा ग्लूटामेट। फिर हमारे पास एक्स्ट्रा अमोनिया है, तो ये अमोनिया फिर से कंबाइन होगा ग्लूटामेट के साथ और बनाएगा ग्लूटामिन। हियर देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ ग्लूटामिन, एंड दिस ग्लूटामिन is there because it body wants to avoid the increased level। बॉडी क्या चाहती है कि जो अमोनिया बढ़ा हुआ है उसे किसी न किसी तरीके से न्यूट्रलाइज करने का ट्राई करती है। बट अभी यहाँ पे ग्लूटामिन बहुत बढ़ चुका है। अब ग्लूटामिन तो बढ़ चुका है लेकिन हमारे पास जो एनर्जी सोर्स था अल्फा कीटोग्लूटारेट वो तो कम हो रहा है बिकॉज इट इज नॉट एंटरिंग इनटू टीसीए साइकिल। सो देयर इज नो टीसीए साइकिल, नो एटीपी रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरॉन्स डेथ, एंड पेशेंट में लैंड अप इनटू कोमा और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। दूसरा इफेक्ट है हमारे अमोनिया का, जिस हाइपर अमोनियमिया का। हमारे एट द एंड वी हैव ग्लूटामिन, यहाँ पे ग्लूटामिन बन चुका है। अब ग्लूटामिन इट हैज अ टेंडेंसी टू shift water, it is called as the osmotic shift of water inside the cell। यहाँ पे there is a osmotic shift of water inside the cell which is responsible for cell swelling। सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनल डैमेज। जो सेल्स का जो प्रॉपर काम था वो पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। और इसी वजह से पेशेंट को अगेन देयर इज अ हाइपर अमोनीमिया हो जाएगा एंड देयर इज अ एनकेफेलोपैथी। क्यों? बिकॉज जो सेल्स हैं हमारे ब्रेन के वो डैमेज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ ग्लूटामिन। Next, there is a decrease in the neurotransmitter. Here you will find that there is a decrease in neurotransmitter. क्यों? Because जो glutamate which is normally used for the formation of GABA वो नहीं बन रहा है और सारा का सारा ग्लूटामेट जो कन्वर्ट हो चुका है ग्लूटामिन में। इसलिए हमारे बॉडी में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी कम हो रहे हैं एंड इट हैज अ हार्मफुल साइड इफेक्ट ऑन द ब्रेन बिकॉज ऑफ अमोनिया टॉक्सिसिटी। Then there may be another mechanism that rise in the brain glutamine level enhances the outflow of glutamine from the cells। अब जो ग्लूटामिन है हमारे ब्रेन सेल में बढ़ रहा है तो दिस ब्रेन सेल व्हाट दे वांट कि ग्लूटामिन को बाहर निकाले। दे वांट टू मेक एग्जिट दिस ग्लूटामिन, दे डोंट वांट दिस ग्लूटामिन। सो ग्लूटामिन जिस ट्रांसपोर्टर सिस्टम से जाता है उसी ट्रांसपोर्टर सिस्टम से ट्रिप्टोफैन अंदर आता है। सो सारा का सारा ग्लूटामिन जो बड़ा हुआ है इट विल कम आउटसाइड and it will drag tryptophan inside, it will move tryptophan inside। अब tryptophan it is a source of this is tryptophan, it is used for the formation of serotonin जो serotonin यहाँ पे बनाता है। there is a abnormal synthesis of serotonin because of elevated level of tryptophan in the brain cells। so यहाँ पे serotonin की level बढ़ जाएगी। Then hyperammonemia, we will discuss disorder one by one। अब दिस हाइपर अमोनीमिया टाइप 1 इसमें एंजाइम डिफिशिएंट है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। So the all enzymes whenever there is a deficiency of enzyme, all enzyme deficiency are autosomal recessive 1। और इस कंडीशन में डिफिशिएंसी ऑफ एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 रहेगा, हाइपर अमोनीमिया रहेगा, यहाँ पे सिम्टम्स ऑफ अमोनिया टॉक्सिसिटी रहेगी और यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन रहेगा। ये क्लासिकल फीचर्स हर डिसऑर्डर में मिलेंगे। देन नेक्स्ट वन इज that is a hyperammonemia type 1। Next one is a deficiency of enzyme ornithine transcarbamylase and it is a hyperammonemia type 2। Here it is a X-linked recessive. It is an exceptional case. It is a X chromosome linked. This disorder which is a X chromosome linked, and here again there is a production of ammonia that is called as a hyperammonemia and responsible for symptoms of ammonia toxicity। And here you can find that there is a in blood, serum and CSF increased level of glutamine। जो अमोनिया था वो कंबाइन हो जाएगा ग्लूटामेट के साथ और बनाएगा ग्लूटामिन। because and here there is an increase in the glutamine
synthesis और वो elevated glutamine you will found it is found in a blood, urine and CSF. Also increases the blood ammonia level and ornithine level. क्यों ornithine बढ़ेगा? क्योंकि ornithine जो नॉर्मली कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ रिएक्ट होके बना रहा था सिट्रुलिन, वो नहीं बनेगा। दैट्स वाई ऑर्निथिन लेवल भी बढ़ जाएगी। मतलब ऑर्निथिन लेवल बढ़ेगा, अमोनिया लेवल बढ़ेगा और ये अमोनिया जो ग्लूटामेट के साथ कंबाइन हो रहा था वो बनाएगा ग्लूटामिन। If the baby is in a fetus, suppose the baby is suffering from this hyperammonemia type 2, not baby, it is a fetus, growing fetus in a womb. So, mother of affected child also exhibit hyperammonemia symptoms. जो मदर को भी hyperammonemia symptoms आएंगे and there is aversion of protein food. Such mother always she always avoids protein food. वो protein food खाने की उसकी इच्छा नहीं होगी. So this is the exceptional case where this hyperammonemia type 2, which is a X-linked disorder, and it is a the enzyme deficient is a ornithine transcarbamylase. Then next disorder is a citrullinemia. The name itself indicates that there is an increased level of citrulline. So which enzyme will be deficient? The arginosuccinate synthetase enzyme will be deficient. It is a autosomal recessive. There is a hyperammonemia यहाँ पे रहेगा, अमोनिया की टॉक्सिसिटी रहेगी एंड मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पे रहेगा. अगेन ब्लड सीएसएफ में हमारा अमोनिया एलिवेटेड रहेगा एंड ऑब्वियसली सिट्रुलिन यहाँ पे बन के अटक जाएगा, तो सिट्रुलिन लेवल भी यहाँ पे बढ़ी हुई रहेगी. And in urine you will find large amount of citrulline which is excreted in a urine. Okay. Then next condition is the argininosuccinic aciduria. Again, it is the autosomal recessive. It usually manifests before 2 years of age and terminate fatally in a early life. Early life में death हो जाती है. And here you can find there is again hyperammonemia, ammonia toxicity, mental retardation, and occurrence of friable tuft hairs called as a trichohexis nodosa. जो hair है easily break हो सकते हैं and they are tuft hair and it is called as a trichohexis nodosa. It is a classical feature of arginosuccinic aciduria, and in urine the name itself indicates that increased excretion of arginosuccinate in a urine. Okay. Then next condition is a हाइपर अर्जिनेमिया. अब यहाँ पे अर्जिनेस नाम का जो एंजाइम है वो एलिवेटेड जो डेफिशिएंट है, तो यहाँ पे अर्जिनिन की लेवल यहाँ पे बढ़ी हुई रहेगी. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज हाइपर अर्जिनेमिया. इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव एंड दिस एंजाइम डिफिशिएंट इन लीवर एंड आरबीसी. ये एंजाइम लीवर और आरबीसी में डिफिशिएंट रहता है and it manifests as hyperammonemia toxicity, and here you will find blood and CSF there is elevated level of arginine, and in urine there is an increased excretion of lysine, cysteine, ornithine and arginine. That is a COLA, that cysteine, ornithine, lysine and arginine, इन सबका excretion यहाँ पे होगा as we have discussed in a cystinuria. So how will you manage this condition? So here you can take your diet should be low in protein, and that will lower your plasma level of your ammonia and disappearance of urinary cysteine lysine pattern. अगर प्रोटीन कम खाओगे तो लाइसिन सिस्टीन का जो एक्सक्रीशन है वो पैटर्न जो है वो कम हो जाएगा. एंड नेक्स्ट वन इज ट्रिपल एच सिंड्रोम. अब यहाँ पे क्या है, देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम ऑन डिफिशियंसी ऑफ ऑर्निथिन ट्रांसपोर्टर. जो ट्रांसपोर्टर है यहाँ पे, ये ट्रांसपोर्टर यहाँ पे डिफिशियंट है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर अवेलेबल नहीं है, तो ऑर्निथिन सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाएगा. दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन, there will be no reaction between ornithine and carbamoyl phosphate. Instead of this ornithine, there is a lysine that reacts with the carbamoyl phosphate, and here there is a formation of homocitrulline. Here you will find homocitrulline, that is called as a homo and elevation of homocitrullinemia that will appear in the urine. Homocitrulline,
that will appear in urine responsible for causing homocitrulinemia. So it is called as a triple H syndrome because here H stand for hyperornithinemia because ornithine which is not entering inside the mitochondria, ammonia is elevated, hyperammonemia, and homocitrulinemia because instead of ornithine there is a formation of homocitrulline. That's why it is called as a homocitrulinemia. That's why it is a triple H syndrome. Now here you can see it in urea cycle disorder. It is all type of disorder in which you will find hyperammonemia and it's ammonia intoxication. Some में रहेगा mental retardation. But the characteristic feature of arginosuccinic aciduria is here you will find trichohexis nodosa. यहाँ पे classically तुम्हें trichohexis nodosa मिलेगा. Now in hyperammonemia, ammonia will be elevated. In hyperammonemia type 2, that is the X-linked one, you will find glutamine and ornithine. यहाँ पे glutamine और ornithine यहाँ पे बढ़ा हुआ मिलेगा. In citrullinemia यहाँ पे citrulline level बढ़ा मिलेगा. In arginosuccinic aciduria, you will find arginosuccinate level in blood and urine. And in case of hyperarginemia, you will find L-arginine which is elevated in blood and CSF. And in urine, you will find cysteine, ornithine, lysine, and arginine. The management of this citrulline is by feeding arginine in this patient, which enhances the excretion of citrulline. यहाँ पे citrulline का excretion arginine कर सकता है. Or here feeding of benzoate which diverts ammonia, nitrogen to form hippuric acid with glycine and increases the excretion of this hippuric acid. यहाँ पे अगर हमने benzoate यूज किया तो benzoic acid जो है वो ग्लाइसिन के साथ कंबाइन होगा. that will help in diverting the ammonia. that is अमोनिया का नाइट्रोजन जो ग्लाइसिन में है वो हमें इस फॉर्म में एक्सक्रीट होने के लिए हेल्प कर सकता है. And in case of hyperarginemia, your diet should be without L-arginine. यहाँ पे arginine हमें नहीं लेना चाहिए. The patient is suffering from hyperarginemia. Now management of hereditary hyperammonemia. So in this condition, the diet should be low in protein and intake of diet with the only essential amino acids. The next step is the reduction of ammonia production in the large intestine. हमारे intestine में जो ammonia बनता है by intestinal bacteria that can be killed by the drug called as a niacin. So because of this enteric bacteria will not there will be no production of ammonia. Then here lactulose is recommended. Lactulose, the mechanism of action is by decreasing the intestinal production of ammonia and absorption of ammonia. Lactulose on metabolism it produces lactic acid, or lactic acid it responsible for decreasing production of ammonia by it will act on this intestinal bacteria, and because of acidic environment जो भी ammonia बनेगा ammonia it will get converted into ammonium ion and it will not reabsorb from intestine. Second one is the administration of phenyl acetate. अगर हम phenyl acetate यहाँ पे देंगे this phenyl acetate it will combine with the glutamine and it forms phenyl acetyl glutamine बनेगा यहाँ पे, and in this by this mechanism जो ammonia का pool है वो कम हो जाएगा. Next one is the administration of benzoate. Benzoate that will react with the glycine and it forms hippuric acid, और इसी मैकेनिज्म से हमारे बॉडी का जो अमोनिया का पूल है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और जो साइड इफेक्ट है वो थोड़े कम हो सकते हैं. So this is all about the management of hereditary hyperammonemia. Thank you.